Good morning, students. Welcome to the biology class. I hope everyone is doing fine. Yes? All right. So let's see who all have joined. Tejaswini, Shreya, Darshan, Komal, Roshan, Paresh, Himanshu, Dharti, Swarali, Kirti, Sujay, Urvesh, Atharv, Nikhil, Ujwal, Namrata, Ayan, Moin, Rajendra, Pratik, Dikshant, Khushi and Shivnath is there. I'm absolutely fine, Himanshu. Thank you for asking. Okay, so guys, 2 दिन बहुत अच्छे से छुट्टी मनाई है या कुछ पढ़ा भी है? Have you revised whatever we have studied? Introduction to Reproduction chapter. क्योंकि कमिंग संडे को इसी के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है? Yes. So on coming Sunday there will be a test on Reproduction chapter. That's very good. All right, more people are joining. Dr. Nakul is there, Mohini, Yash, and Dhanashri. Okay. All right. So रिवाइज करते रहो क्योंकि संडे को फिर टेस्ट देना है और इस बार अच्छा स्कोर भेजना प्लीज. ऑलराइट, चलो तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है रिप्रोडक्शन का वो फिनिश हो चुका है. राइट? In the last we have discussed about the parthenogenesis. Today we will start new chapter that is sexual reproduction in plants. Okay? Now, sexual reproduction मतलब asexual हम plants में पहले ही पढ़ चुके हैं. Right? If you remember vegetative propagation, it is all about artificial as well as natural. It is all about the asexual reproduction in plants. Okay? Now, today we will discuss the sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. चलो. And where is खुशमत? आज खुशमत का मैसेज नहीं आया. खुशमत पटेल रिपोर्टिंग सर. Moin, that I will announce later on whether it is on app or general. I will send the file or whatever. I will announce it later on. Okay. All right. Now, so sexual reproduction in plant. We all know that in sexual reproduction, gametes are formed. These gametes will fuse to form embryo. And this embryo will give rise to a new progeny. Same way in plants also, two different types of gametes, male gamete pollen and female gamete ovule are produced. All right. Then the fusion of these two with the help of pollen tube, all right, takes place, and then embryo is formed. All right. Some topics, all right, some procedures are different in plant reproduction as compared to human reproduction. Okay, human reproduction is bit complicated, बहुत ज़्यादा complicated है. यहाँ पे इतना complexity नहीं है, ठीक है? बहुत easy way में आप पूरा के पूरा chapter finish कर दोगे, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आधी बातें आपने पहले ही पढ़ चुकी हैं. जैसे हम लोगों ने flower का structure, उसके parts, right? What are the different types of flowers? ये सब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. Remember morphology in plants? Yes. So yes beta, the whole chapter will come. Reproduction, the first chapter, right? Everything, asexual, sexual reproductive events, then asexual के different types, phases of lifespan, life cycle, everything. Okay, so definitely the reproductive structure in plants, the sexual reproductive structure in plants are flowers. So first we need to discuss the structure of flower again. Okay. सबसे पहले flower होते क्या है? They are the modified shoot actually. Definitely. So flowers are what? They are modified shoot. Okay,
Sir, modified means what? I have told you that on shoot, on stem, ठीक है, यहाँ पे stem भी लिख सकते हैं हम, they are modified stem actually. On stem, nodes and internodes are present. सबको पता है ये, इसी के बेसिस पे हमने वहां पे पोटैटो में ट्यूबर को जो है स्टेम बोला था, because nodes and internodes were present there. So यहाँ पर भी शूट के ऊपर, स्टेम के ऊपर nodes and internodes present होंगे. ये nodes and internodes compressed हो जाते हैं in case of flowers. ठीक है? For example, this is the shoot. It is having nodes like this. Okay? The distance between two nodes is internode region. ये थोड़ा सा compress हो जाता है, तो it will look like this. Okay? Definitely it will form a flower. All right? Yes. So they are the modified shoot in which the internode region is being compressed. Okay? वो खत्म हो जाता है, इसीलिए nodes जो है वो पास पास आ जाते हैं. Right? चलो, इससे प्रूव हो गया कि ये modified stem ही है. Next thing is that, very good Ujjwal, brilliant. Now, next thing is that what I was telling you, node and internode. All right. Then the different whorls of flower. Whorls means the curve. All right. Yes. ऐसे circular pattern में present रहने वाले structure. These whorls are modified leaves actually. ये क्या होती हैं? They are modified leaves. डेफिनेटली नोड्स के ऊपर क्या राइज होती है? ब्रांचेस एंड लीव्स. तो यहां पे जो वर्ल्स बनेंगे फ्लावर के, दे आर मॉडिफाइड लीव्स एक्चुअली. ओके, यस. और आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि ऑलराइट मॉली. ओके, हाँ, क्या बता रहा था मैं? आपने 11th में पढ़ा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है? स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. रिमेंबर, अभी अभी थोड़े दिनों पहले भी हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था. यहां पे द लीव्स, दीज whorls आर द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट एक्चुअली. ठीक है? सो दिस स्पोरोफाइट विल अंडरगो meiotic division. I'm writing it here. Sporophyte will undergo meiotic division to form gametophyte. And these gametophyte will further mitotically form two different types of gametes. Right? These are the male gamete and female gamete. Both again fuses to form diploid zygote. Diploid zygote. This zygote will again grow in sporophyte. Right? So like this, alternation of generation is present in plants. If we talk about flowering plant, अच्छा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बच्चों कि फ्लावरिंग प्लांट कौन सा ग्रुप है. अभी तक सबको पता होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट. प्लांट किंगडम में जितने भी ग्रुप पढ़े आपने, फ्लावरिंग प्लांट कौन सा ग्रुप है बच्चों? दैट इज angiosperm. Absolutely right. Everyone knows it is angiosperm. Okay? So angiosperm की हम यहाँ पे बात करेंगे. फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है. अभी मैंने बताया फ्लावर्स आर मॉडिफाइड स्टेम एंड उसके जो whorls हैं, these are the modified leaves. इन्हीं का कोई टिश्यू, इन्हीं का कोई सेल जाकर और माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मेल एंड फीमेल गैमीट बनाने वाला है. ठीक है?
कैसे बनाएगा डिटेल में देखेंगे। चलो अभी तो ये हो गया क्लियर, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट। All right, coming to the different parts of flower. तो flowers are having 4 whorls, okay, 4 whorl होते हैं इनके अंदर। The number 1 whorl, the outermost, हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। So the outermost whorl is of sepals, okay, sepals। मैंने बोला आउटर मोस्ट वर्ल इज ऑफ सेपल। अभी मैंने सेपल्स के वर्ल का नाम नहीं बताया, तो व्हाट डू यू कॉल द वर्ल ऑफ सेपल्स? क्विकली, ये बहुत बेसिक चीज है, फटाफट आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाओ। चलो ये लैग है तो मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा, देन आई हैव टू वेट, देन यू विल आंसर इट। मैं ही बता देता हूं। आई होप यू रिमेंबर। वेरी गुड। Yes, Moin, Shreyan, Pratik. It is called as calyx. ठीक है। कैलिक्स का फंक्शन ये है, एक तो बड स्टेज में जब फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट, बड स्टेज में, अनब्लूम्ड स्टेज में। दूसरा, जो वर्ल की कनेक्शन पॉइंट होती है फ्लावर में, राइट, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ऑलराइट, तो ये जो कनेक्टिव पॉइंट होता है, राइट, सारे वर्ल्स का, दिस इज रिचली सप्लाई विद वाटर। यहां से इवेपोरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कैलिक्स और सेपल्स इंडिविजुअली प्रोटेक्ट ट्रांसपीरेशन आल्सो फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। यस, एंड डेफिनेटली सपोर्ट तो देंगे ही, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटेक्शन भी देंगे ही ड्यूरिंग बड स्टेज। दिस इज अनदर फीचर दैट दे प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन फ्रॉम फ्लावर। अभी मैंने बताया कि दीज आर मॉडिफाइड लीव्स एक्चुअली। अब इन लीव्स के पास वो वाले मॉडिफिकेशन नहीं है जो ट्रांसपीरेशन को रोक पाए। आपने देखा होगा पेटल्स आर वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होते हैं, इजीली इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन उससे हो सकता है। So just to prevent the transpiration from this part, sepals are there. Okay. All right. Sepals ने कैलिक्स बना दिया। अच्छा, कई बार जो सेपल्स है वो भी कलरफुल होते हैं, ठीक है, उनमें भी कलर होता है, just like petals. So what do you call this condition? You call this condition, these type of sepals, as petaloids, क्योंकि they are looking like petals. Petaloid they are called as. Okay, right, definitely. So when sepals are non-green, they are colored, looking like petals, they are called as petaloids. Okay, so that was about the sepal. Coming to the second whorl from outside, this was the first whorl, this is the second whorl. Second whorl is made up of petals, definitely, okay, and the complete collection circle is known as corolla, very similar to corona, right, but it is corolla actually.
सृष्टि सेपेलॉइड कंडीशन आएगी जब पेटल्स जो है वो ग्रीन होंगे, तब सेपेलॉइड होगा. ओके, ऑलराइट. सो दैट वाज अबाउट कोरोला. कोरोला में डिफरेंट कलरफुल, बड़े वाइब्रेंट कलर लिए हुए अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं. Why they are so? Just to attract the pollinating agencies, biotic pollinating agencies. इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं बाद में, pollination जब पढ़ेंगे तब. ठीक है, तो they are brightly colored, very attractive. इन्हीं की वजह से फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. एंड इनका पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर. एंड डेफिनेटली they protect the inner two walls also, gynoecium and androecium, male and female parts of flower. They also protect the male and female parts. Okay, yes, biotic agencies include insects, birds, all right, all these. Okay, now there is a condition when petals and sepals, all right, they are present together and they are forming a single envelope. All right, what do you call that envelope when petals and sepal are forming same envelope, united to form a envelope? That is known as perianth. That is known as perianth. Absolutely right, Shreya. Brilliant. Very good, Tanuj. Okay, so this is another term, another structure formed by sepals and petals, that is perianth. Now, coming to the third word, इनको मैं रफ कर देता हूं. Coming to the third word. Third word belongs to the androecium. As you can see, first, second and third is this filament. So third is androecium. All right. Now androecium consists of definitely the male reproductive part. Okay, and here male reproductive part is also known as stamen. Okay, yes, it is also known as stamen. Now stamen consists of anther and filament. Absolutely right, Kirti has already written. It consists of a long stalk to which this lobular structure is connected. I hope it is not going out of the focus. It is there. Yes. So it consists of a long filament, long stalk known as filament, and a lobular structure known as anther. Okay. Anther is the main part in which male gametes are produced. Right? The pollen grains are produced. So we need to discuss the development of pollen grain also. ठीक है, और एंथर का भी स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, कैसे वो बनता है, कैसा शेप रहता है उसका. Okay, so that is the androecium, actually male gamete producing part. All right, now the structure of anther, all right, it is bilobed. Bilobed मतलब अगर इसको मैं यहां से तोड़कर और मैग्नीफाई करूं तो it will look like this. It will look like this. इसको ऐसे कट कर देंगे तो bilobe, two lobes, ठीक है, एंड इन दो लोब्स के अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है. राइट, मतलब these are the circles. These circles are the place where pollen grains will be developed. Okay, so tetrasporangiate condition in
डायथिकस और बायलोब्ड एंथर. ओके, ऑल राइट. अब जब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मोनोथिकस या बायथिकस की जगह मोनोथिकस, यूनिस्पोरेंजिएट कंडीशन इज आल्सो फाउंड इन सम फ्लावर्स. ओके, यस यस यस, वेट, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम. अभी मैंने बस आपको इसका स्ट्रक्चर बताया कट करके. ठीक है, ऑल राइट. सो दैट वाज अबाउट स्टेमन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट whorl, the innermost whorl. As you can observe, it is having this platform, a long stalk, and this swollen part. This platform is meant for the reception of pollen grain, and it is known as stigma. This long stalk, it can be solid or hollow, right? It is meant for the what we can say, chemotropic movement of pollen tube. Okay, and this swollen part consists of ovules. Okay, it is having its own partition, locules, and from this ovules are attached. Ovules are having egg cell, and by the fusion of egg with male gamete, embryo will be formed. Okay, all right. So next part of the flower, the next whorl is gynoecium. Gynoecium. Okay, it consists of stigma, and stigma secretes sticky matter. All right, that consists of recognition factor also, कि जो पोलन आया है वो सेम स्पीशीज का है या नहीं. अगर सेम स्पीशीज का होगा तभी वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने देगा. ठीक है, चलो. सो स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड देन फाइनली द ओवरी. ओके, यस, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ gynoecium. Absolutely right. So that finishes the structure of your flower. Sexual reproductory structure. Okay. Now, important thing. This male part, androecium, is a modified leaf. I have already told you. This modified leaf is called as microsporophyll. Microsporophyll. And the leaf which forms gynoecium is megasporophyll. Megasporophyll. अब आपको ये पढ़ के थोड़ा थोड़ा तो ध्यान आ रहा है कि अभी हमने देखा था स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है. तो डेफिनेटली ये जो लीव्स है, स्पोरोफाइटिक पार्ट, दे आर कन्वर्टिंग इनटू गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. ऑलराइट, यस. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. इट इज वेरी इजी पार्ट. ऑलराइट, कुछ भी नथिंग न्यू, कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं थी. हमने जस्ट एक रिवीजन लिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का. चलो, तो ये हो गया आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर. नाउ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स? एवरीवन नोस. बेसिकली इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो. It leads to the formation of fruit also. Fruit भी आपको देता है, the ripened ovary actually. ठीक है, ये सब हमने मॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ लिया है. Function of flower. It helps in pollination also. Different types of pollinators are there for different types of flowers, right? Okay, so that we are not discussing. Everyone knows the function of flower. Okay, now let's start the topic of production of
मेल गैमीट, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं एंथर्स के अंदर, वो स्टार्ट करते हैं हम। चलो, अच्छा, अभी मैंने बताया एंड्रोशियम वाली लीफ को क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल, और मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे वहां पे ह्यूमन में स्पर्म का फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, सेम वे यहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। All right. Now we will discuss about the process of microsporogenesis. The formation of pollen grains. All right. Yes. Now, pollen grains are formed by a specialized cell actually. ठीक है? These specialized cell earlier they were just the parenchymatous mass. I hope you remember about parenchyma. Yes. All right. So permanent tissue का एक टाइप है। चलो, तो पेरेनकाइमा का कुछ मास जो है सेल का, that is converted into archisporial cell, and this archisporial cell will give rise to microspore mother cell, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, एंथर के अंदर कौन सा सेल, पेरेनकाइमेटस सेल, parenchymatous mass group of cell, right? Some of them will be converted to, I'm sorry, some of them will be converted to archisporial cell. चलो वो भी लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं some cells converted to archisporial cells, ठीक है। Now these archisporial cells will further form the microspore mother cells, okay, in anthers। अगर हम बात करें ओवरी में, तो these archisporial cell will form megaspore mother cell, ठीक है। चलो, तो these are forming microspore mother cells. In short, they are called as MMC, microspore mother cells, ठीक है। All right. Definitely, अब ये जो है मदर सेल है, पेरेंट सेल है, यही आगे जाके डिवीजन करेंगे और क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर, द पोलन ग्रेन। प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इनको रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है सर? रिडक्शनल डिवीजन कुछ नहीं, मियोसिस का ही दूसरा नाम है। क्योंकि जो स्पोरोफाइट के सेल हैं, ये सब दे आर डिप्लॉयड एक्चुअली, और गैमीट कभी भी डिप्लॉयड नहीं बनेंगे, ठीक है, वरना फिर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, ठीक है। सो ये they will undergo reductional division, meiosis, and will give rise to the pollen grains, haploid pollen grains actually, okay। चलो, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये लॉन्ग जो प्रोसेस है, they are undergoing the division, reductional division,
okay, to form gametes. Okay, that too haploid gamete. The process is known as microsporogenesis. ठीक है, चलो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि ये ऐसे होता है, बट इट इज नॉट दैट मच ऑफ सिंपल. इट्स बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ह्यूमन के जितना नहीं, ह्यूमन में थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, हमको ये जो पार्ट है माइक्रोस्पोर मदर सेल से गैमीट बनने तक का पार्ट स्टडी करना है. डेफिनेटली इट विल इन्वॉल्व मियोसिस, एंड फॉर मेंटेनिंग द पॉपुलेशन mitosis is also involved. Okay, yes. What I need to repeat, Shivam? क्या रिपीट करवाने को बोल रहा है बेटा? आई कैन अंडरस्टैंड. अगर इतनी इच्छा हो रही है रिपीट सुनने की बेटा, तो रिवर्स कर लेना रिकॉर्डिंग को, ठीक है, और बार बार सुनते रहना. राइट शिवा? यस. ओके, चलो, तो आई होप रिपीटिशन की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरी सुविधा है रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके देखने की. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द कंप्लीट प्रोसेस एक्चुअली. अच्छा, this microsporogenesis, where it is taking place? It is taking place inside the anthers, all right? And anther का स्ट्रक्चर भी देखना बहुत जरूरी है. तो चलो पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ही एंथर का स्ट्रक्चर यहां पे स्टडी कर लेते हैं. ओके, अरे बेटा दीज आर जस्ट द टर्म्स, ठीक है, इसेंशियल एंड नेसेसरी विच आर इजीली डिफरेंशिएबल. और ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया है पूरा के पूरा. ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग टॉपिक एक्चुअली. What I was telling you the structure of anther. Now, definitely the anther is the fertile part of stamen which produces microspores, ultimately the pollen grains. Okay, it is made up of two lobes. Let me draw them. Two lobes. It looks like butterfly. These are the two lobes actually. ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं. Okay. Now, the anthers consisting of two lobes are known as diathecous. Okay, it is called as diathecous. And in majority of plants, diathecous condition is there. All right. Both the lobes
are connected by this connective here. All right, it is having mechanical tissue as well as basically the fibers and vascular supply also. So this structure is known as the connective, which is connecting the two different lobes of anther. All right. Yes. Then coming to the different. Okay, I have told you about the diathecous condition. Let me tell you about the monothecous condition also. Okay, in many plants, such as plants of family Malvaceae. Have you heard of family Malvaceae, which produces slimy secretion? Yes, I have told you in class 11, if you remember. Otherwise, आप जाके रिवाइज करना आज. तो member of Malvaceae family, they have monothecous anther, which means only single lobe is there. Okay, single lobe is there. Yes, lady's finger is there. Very good. It seems that Ujjwal is studying and he is remembering thing also. Very good, Ujjwal. Okay, so that was about the monothecous. Okay, now monothecous anther, what I was telling you, yes, बायथिकस में चार स्ट्रक्चर होते हैं. These are tetrasporangiate. मोनोथिकस के अंदर only bisporangiate condition is there. So definitely you will remember this is tetrasporangiate and this is bisporangiate. Okay. Coming to the smallest parasitic angiosperm, that is Arceuthobium. कुछ दिनों पहले, where is Neha? Neha is not there in the class. Neha has asked one question. Sir, do we need to remember Arceuthobium plant? This is the smallest angiospermic plant, parasitic angiospermic plant. Okay, and it is also having the monothecous or bisporangiate condition. Okay, yes, absolutely right. So yes, you need to remember this क्योंकि इसके ऊपर based questions आते हैं. Okay, Arceuthobium, R extra आ गया, it is O, Arceuthobium. ठीक है, तो this is about the shape of anther. अब इसमें different layers होंगी, cellular layers. चलो अब उनकी बात कर लेते हैं. शेप की बात हो गई, diathecous, monothecous. Now let us study about the different layers of anther. All right. So the outermost layer is epidermis actually. This is the outermost layer. अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट बनाऊंगा. It will take less time. This is the outermost layer known as epidermis. Here I am writing epidermis. Okay, the outermost layer. In epidermis, what I was telling you, yes, the main function of epidermis is to protect the anther actually, and generally it is single layered. ठीक है, ये सिंगल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में. Then next layer is endothecium. Next layer of anther is endothecium.
देखो मैंने यहां पे एंडोथीशियम के जो सेल्स हैं वो थोड़े से थिकली वॉल्ड बनाए हैं, थिक बनाए हैं। क्यों, अभी बताएंगे। चलो, तो दिस सेकेंड लेयर इज कंसिस्ट ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ऑलराइट। नाउ endothecium at this point is known as stomium. All right, this point is also known as stomium. So endothecium at stomium are thick walled. They help in the dehiscence, bursting of anther to release the pollen grain. ठीक है, यहां से जनरली ये ब्रेक होगा. That's why these cells are having thick wall. Okay, all right. मानसी, देखो, now you are in 12th class बेटा, तो थोड़ा सा अपन यूज करेंगे इसको. कैसे? अभी अपन सारी बातें समझ लेंगे, ठीक, और फिर भी मैं बीच में टाइम दूंगा आपको लिखने का. ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्लो रखो ताकि आप लिख भी लो बीच में. उसके बाद जैसे ही क्लासेस ओवर होती हैं, रिकॉर्डिंग लगाई और जो जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओगे. नोट्स आर प्रिपेयर्ड एंड डोंट वरी, कॉलेज जल्दी खुलने वाले हैं, तो हम लोग कॉलेज में ही मिलने वाले हैं फिर वापस से. ठीक है, चलो, तो ये हो गया एंडोथीशियम. एंडोथीशियम में मैंने बताया कि स्टोमियम के पास में थिकनिंग होती है बहुत वॉल्स पे. दिस थिकनिंग इज ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन एंड दिस लेटर हेल्प्स इन द bursting of anther to release the pollen grains, right? सृष्टि, फिक्स डेट तो इवन आई डोंट नो, बट वेरी सून कॉलेज इज स्टार्टिंग, तो हम सब लोग क्लासरूम में फिर से मिलने वाले हैं. डेफिनेटली थोड़ा सा मोड जो है वो अलग होगा, दूर दूर बैठोगे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग तुम लोगों को भी फॉलो करना होगा, बट यस, सून वी विल मीट इन द कॉलेज. All right, so Gauri has asked middle layers. Definitely middle layers are present, but middle layers are present between this sporangia and the endothecium. All right, चलो अभी पढ़ते हैं, वापस से सब इधर पे आ जाओ. जब भी कॉलेज खुलेगा डेफिनेटली हम लोग मिलने ही वाले हैं. अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है. The next layer consists of middle layers. The third layer is middle layers. ठीक है. अब मिडिल लेयर मतलब ये जगह जो पोलन ग्रेन्स के डेवलप होने की जगह है, ठीक है, उसके और एंडोथीशियम के बीच में जो लेयर्स हैं, 2-3 layers, these are known as middle layers. Like this, these are known as middle layers. Okay, all right. So what is the function of these middle layers? Actually, when spore mother cell divides, it will require nutrition. These middle layer will degenerate and provide nutrition to the developing spore. Okay, so that is their main function. They degenerate and give nutrition to the developing spore actually. Okay, all right. After that, there is another layer, very important, this layer. Okay, this layer is known as tapetum. Fourth layer, tapetum.
ओके। अब टैपिटम का भी काम न्यूट्रिशन देना ही है और ये भी डीजनरेट ही होगा, बट इसके अलावा भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पोलन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट करके एक येलो कलर की कवरिंग होती है, ठीक है, ग्रीजी कवरिंग, जिसको पोलन किट बोलते हैं। टैपिटम का काम है वो पोलन किट और स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड करना, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपने सुना होगा, ये इतना स्टेबल कंपाउंड है, इतना इनर्ट कंपाउंड है कि फॉसिल तक भी, इसका फॉसिल भी बन जाए पोलन ग्रेन का, तब भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, इतना स्टेबल। इसीलिए पोलन ग्रेन से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, राइट। जैसे ही स्प्रिंग सीजन में देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लावरिंग एवरीवेयर, तो डेफिनेटली फ्लावरिंग है तो पोलन्स भी बहुत होंगे एयर में, तो स्प्रिंग में बहुत सारे लोगों को एलर्जीज, एस्मा, रनी नोज, वाटरी आईज, ये सब दिखते हैं। क्यों? ड्यू टू पोलन्स, ऑलराइट। यस, द केमिकल प्रेजेंट ओवर पोलन्स। All right. Now again this Moin has asked one question. एफीमेरल, अच्छा एफीमेरल बेटा, इनका जो फेट है, लाइफ है, ये बहुत शॉर्ट है। इनिशियली ये बनेंगे, बाद में ये डीजनरेट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दीज लेयर्स आर एफीमेरल, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड। चलो, तो ये हो गया आपका टैपिटम। अब टैपिटम जो है, दिस इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड ऑल्सो। यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज मल्टीन्यूक्लिएटेड and polyploid also. I hope you know the meaning of polyploid. Yes, so many sets of chromosomes are there. Because it is nutritive in function, polyploidy helps in providing more nutrition, more synthesis of proteins, right? Yes, so this characteristic is helping in more synthesis of nutrition actually. Okay. All right. Now, I have told you that tapetum provides sporopollenin to the outer covering of spore, microspore, the pollen grain. ठीक है? अब ये sporopollenin कौन provide करता है? There present a specialized body in tapetum cell known as Ubish bodies. Okay, I'm writing it here. Ubish bodies. They helps in providing sporopollenin and special ornamentation. Ornamentation मतलब जो sporopollenin की लेयर होगी ना, उसके ऊपर एक अलग सा ही ornamentation, pattern of design, ठीक है, like this. This is very specific for every type of pollen. Okay? Yes. So Ubish bodies will provide ornamentation and sporopollenin to the microspore. Okay, all right. Now another important thing is that this tapetum is divided into two different types. ये भी दो different type की होती है। कुछ साइंटिस्ट ने इनको माना कि ये दो टाइप की होती है, पर कुछ साइंटिस्ट ने इनको एक ही टाइप का माना। पर हम पढ़ लेते हैं कि ये दो टाइप कौन सी है। चलो, तो tapetum is of two different types. Number one is amoeboid tapetum. कहां पे लिखें? कुछ तो रफ करना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। tapetum के बारे में पढ़ रहे थे, alright. अब tapetum is of two type. Number one, amoeboid tapetum,
Number 2, secretory tapetum. Okay, yes. Now, what is the difference between these two? In amoeboid tapetum, the cell will break, पूरा सेल ग्रो होगा टैपिटम का, और फिर ब्रेक होके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को. ठीक है, दिस इज ऑफ अमीबॉइड. नेक्स्ट, सिक्रीटरी. सेल विल नॉट ब्रेक, it will release, it will secrete the nutrition to the growing microspores, right? This is the main difference actually. Complete cell will break and it will not break, it will secrete the nutrition. All right, okay. Absolutely, Dr. Nakul Sharma. The other name for amoeboid is periplasmodial tapetum, and for secretory is glandular tapetum. This is also known as periplasmodial and this is glandular. Okay, all right. So this finishes. अच्छा, इसके बीच में archisporial cells होंगे which will later convert to microspore mother cell. Microspore mother cell will undergo division to form microspores, the pollen grains. ठीक है, जब pollen grains बन जाएंगे तब ये सब कुछ डीजनरेट होने वाला है. मिडिल लेयर्स, टैपिटम, ठीक है, और यहां पे सिर्फ क्या रह जाने वाले हैं? पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इनके डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन चाहिए था और सारी लेयर्स ने इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया. जब ये मैच्योर हो जाएगा तब यहां पे जो फाइबर्स है वो क्या बोलेंगे, सेल्स को जो है पुल करेंगे. सेल्स आपस में पुल होंगे और स्ट्रोमियम में ऐसे डेहिसेंस हो जाएगा. ठीक है, और यहां से फिर पोलन बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, दिस इज डेहिसेंस ऑफ पोलन एक्चुअली. ठीक, चलो अब देखते हैं कि कैसे एंथर के अंदर पोलन का डेवलपमेंट होता है. ये हमने एंथर वाला पूरा पार्ट देख लिया, यहां वाला पार्ट देखेंगे कौन कौन से डिवीजन होते हैं, किस पैटर्न में ये डिवाइड करते हैं. ऑल राइट, चलो. सो सबसे पहले क्या होगा, जो भी यंग एंथर है, ठीक है, उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा. दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल will undergo primary they will divide to form 4 microspore cells. कहां पे लिखे, इधर लिख लेते हैं. First cell is there. All right, this is known as microspore mother cell. Okay, this will undergo meiosis, and meiosis में जो है 4 सेल बनेंगे. अच्छा, उसके पहले ये अपने आसपास एक थिक लेयर बना लेंगे. ठीक है, थिक लेयर ऑफ कैलोस एक्चुअली. ठीक है, that is beta 1 glucan. कैलोस की एक थिक लेयर बना लेंगे which is beta 1 glucan. All right, 1-3 actually. चलो, इसने एक पूरा लेयर बना लिया. अब ये मियोसिस करेगा तो 4 सेल बनेंगे. अब ये 4 सेल जो हैं अपनी सेल वॉल बीच में से ब्रेक करके और यहां पे ही डिवाइड हो जाएंगे लाइक दिस. ठीक है, इसमें नहीं करना है, यहां पे करेंगे.
ठीक है, cell wall is there. Just the slice of pizza, just they look like pizza ki slices, they will form this condition. All right, the tetrad condition. Okay, yes. Now usually they are arranged like this tetrad के फॉर्म में, बट इनका डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो सकता है. कौन कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है इनका? इनका अरेंजमेंट हो सकता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में कैसा होगा? 3 यहां पे और एक इसके ऊपर, जस्ट लाइक जो टेट्राहाइड्रल शेप आप बनाते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, तो एक इसके ऊपर, दिस इज टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहाइड्रल. ओके, देन very good Nakul. Then they are also arranged like isobilateral. In isobilateral, like this arrangement. All right, this is isobilateral. And then decussate arrangement like this. दो जो है बीच के सेल एनलार्ज हो जाएंगे और दो सेल छोटे ही रहेंगे. दिस इज decussate arrangement. Okay, this is looking like some modern art, but it is not. It is decussate arrangement of tetrad. All right, then you are having linear arrangement. Linear arrangement in which all are arranged in linear form like this. This is linear arrangement. And in the end, T-shaped arrangement is there. T-shaped arrangement. Okay, so this is how the tetrad are arranged in different types of plants. Okay, later on the wall will be broken and these individual tetrad will be released. Okay, sporopollenin and pollen kit will be provided by the tapetum layer. Okay, the U-bish body present in tapetum layer. All right, so that is how the microsporogenesis takes place. आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है. कल स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल. ऑल राइट, चलो तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे क्लास एंड करते हैं अपनी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.